Hi friends, hope you're doing well. I'm Dr. Milind. So recently there is new buzz in the medical field since the introduction of next exam. And recently there was a webinar followed by release of gazette by NMC about this new national exit test. And there are a lot of questions in the minds of aspirants who are preparing for this exam. So in this video, I'll briefly try to address a few things about the what the exam would be, and also alongside I'll discuss that how it will change the current preparation scenario and what a student should include in his preparation, what things he should include in his preparation to face this new next exam. So let's see how to tackle it. And today I will talk about the next one mainly, because that is mainly the theory exam and the students who are preparing for the PG entrance examination. So my idea is to address them first. In detail, I'll talk about next two later as well. So let's start today's video. तो जो गैजेट रिलीज हुआ था रिसेंटली, इसमें दे हैव गिवन ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम कैसे होगा. यस, देयर आर डेफिनेटली सम कंफ्यूजन्स, कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, एंड वी विल हैव टू वेट फॉर द वंस द थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग, इसके बारे में थोड़ा क्लियरेंस और आएगा. So first of all, let's talk about the first this next step one. It will be a theory exam, as they have said, multiple choice type of questions. It will be a computer based exam, and it will be having six papers, and uh, both part one and two will have six papers. So it will serve as a pre-internship examination for the students who are completing MBBS, also for the foreign medical graduates to start their. It will replace their FMG exam, and next two will you'll have to give after your internship, and then you'll receive your medical registration. तो ये जो सब्जेक्ट है, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स लाइक फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी and pathology will be included. Such subjects will be included in that. Surgery and other allied disciplines, this will include anesthesia, maybe anatomy questions you'll get, orthopedics, obstetrics and gynecology, and other three subjects, pediatrics, ENT and ophthalm. So these are the six separate papers which will be conducted. Now जो होगा एग्जाम वो साल में दो बार होगा, मई और नवंबर में. Conducted board, they have said that AIMS New Delhi will be the conducting authority for this exam. अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये है कि विद इन 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एमबीबीएस आपको क्लियर करना है. आप जितना मर्जी चाहे आप नेक्स्ट स्टेप वन और नेक्स्ट टू दे सकते हो. अगर आपको अपना स्कोर भी इम्प्रूव करना है तो नेक्स्ट वन दे सेड विल बी फॉर्म द स्कोर विल बी टेकन फॉर योर पीजी एडमिशन एंड रैंकिंग विल बी गिवन. तो आपको अगर अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है तो आप नेक्स्ट वन फिर से दे सकते हो, बट आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आपको पहले नेक्स्ट टू देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वन दे सकते हो. सो दैट इज वन टेक अवे. अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो फर्स्ट देर विल बी रॉ स्कोर्स. सी, दिस इज जस्ट अ गैजेट. आई मीन, we will get a detailed brochure soon, and we will talk about that later, but it's just an overview. Passing mark 50% होगा, or it either like 50% in each subject or a raw score, and that you have to get to pass this exam. नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट ऑल्सो द टाई ब्रेकर. तो अर्लियर जो हमारा नेक्स्ट एन आई सी टी नीट पी जी एन आई सी टी होता था, उसमें नंबर ऑफ लाइक करेक्ट रिस्पॉन्स, लाइक जिसने ज्यादा करेक्ट किए हैं ही विल बी प्लेस्ड हायर, फॉलोड बाय एमबीबीएस परसेंटेज, फॉलोड बाय बर्थ डेट एंड ऑल. बट इन्होंने जो रखा है फॉर द टाई ब्रेकर इज फर्स्ट इज योर स्कोर्स, एंड देन जिसके कम अटेम्प्ट्स है ही विल बी प्लेस्ड हायर, दैट विल बी सेकंड टाई ब्रेकर, एंड लास्ट विल बी the medicine and allied disciplines are given the highest weightage. अगर आपके उसमें marks ज़्यादा है तो you'll be placed higher, followed by surgery, obstetrics, and in that order. So that's an interesting tiebreaker criteria they have introduced. तो exam होगा कैसे, तो questions कैसे expect कर सकते हैं. See, let me tell you that no matter in the past also, a few years back, like if we see over the last 8 years, things have changed. पहले AIPGM होता था जो एक पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम था, अगेन एमसीक्यू बेस्ड. उसके बाद नीट पीजी हो गया जो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, फिर क्वेश्चन 300 आते थे, उसके बाद 200 हो गए. तो थिंग्स विल चेंज, बट वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन, वॉट एवर लाइक हियर दे हैव गिवन that here they want to test the comprehension, analytical skills and clinical problem solvings, more than just रट्टाफिकेशन जो चलता है उसको उन्हें डिस्करेज करना है. That is the argument they have given, and they want to give more of a cases and clinical scenarios.
And if we want to see the paper, it will be more 60 to 70% will be problem solving and analytical skill types, 20 to 30% comprehension type, and 5 to 15% recall type, that repeats you'll get. So what is the significance of this idea? So here the solving MCQs become important. So next one में अगर आपको, if you want to become come in the top ranks, you have to practice solving MCQs. See, earlier we used to encourage कि आप theory ज़्यादा पढ़ो, आप theory को ज़्यादा ध्यान दो. But now if you are going to get more problem solving questions, then you should be able to tackle, because reading theory is not alone significant, sufficient. आपको वो theory को apply करना आना चाहिए, because more you practice your MCQs, your brain will be trained. तो इसमें earlier I used to say, spend your like 70 to 80% time reading theory and 20% time solving MCQs. But I'll say now you have to do it like more of a 60-40. At 40% of the time you have to give solving MCQs, reading their explanation and improving your analytical skills. Again, solving the previous year questions will be important, because 15% that is a very significant part of your question paper, and you'll have to read those. Also, they have distributed as must know, nice to know, and may know. So 60% will be come from the must know. That is your simple topics, that is your common topics, that is your repeated topics. 30% where you need to do a little bit of extra work, जो कोई नई guidelines आई है, या फिर there are few things जो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं, जैसे trauma from surgery, lot of people skip it. So that is something that is nice to know. And 10% may know, so that is very like rare things that are asked. I don't think that you should be worried about this 10%. What will decide your rank is 60% of this question, which are must know. And trust me, the papers there are, I'll just explain this in the next slide. So if you see that there are a lot of questions, so 120 each from medicine, surgery, obstetrics, 60 each from pediatrics, ENT and ophthalm. So ये जो must know वाले हैं 60%, so you will see जब 200 क्वेश्चन का पेपर होता था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे. तो वहां पे एक था कि आपके पास ऑप्शंस कम थे. नाउ यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व. तो इजी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, कॉमन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे. एंड जब ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ऐसे इजी, सो देर आर मोर चांसेस दैट यू विल मेक लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. एंड ऐसे होता है, जब पेपर इजी आने लगता है, जब ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो सिली मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं. So this is why it becomes very important that you have to work more on your simple things and the common things. तो पहले थियरी में आप आपका जो भी नोट्स है क्लास के, जो भी आप क्लास कर रहे हो, वो नोट्स को आप पहले कंप्लीट करो. फर्स्ट डू द कॉमन थिंग्स, डोंट रन बिहाइंड कि अब नेक्स्ट पैटर्न आ गया है तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, नथिंग नीडेड. इट जस्ट सेम एग्जाम विद न्यू फैंसी नेम एंड लिटिल बिट ऑफ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप जो कॉमनली है, जो नोट्स में आपको दिया हुआ है, जो चीजें बार बार पूछी जाती है, उसको स्ट्रेंथन करो. आपको आपके सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नीचे लेके आना. इफ यू have seen, I have released lot of interviews on my channel. If you see that, you'll realize the toppers are those who have done the least silly mistakes. So you have to work on that. तो इसमें आपको अगेन पीडियाट्रिक्स, ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी हैव बिकम अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. सी अर्लियर जब 200 क्वेश्चंस होते थे तो ओवरलैपिंग होती थी, कि आपको नहीं पता कि ये शायद क्वेश्चन ऑर्थो का भी हो सकता है, रेडियो का भी हो सकता है, एनाटॉमी का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ईएनटी का भी हो सकता है, सर्जरी का भी हो सकता है. बट नाउ देयर इज अ क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन कि मेडिसिन और अलाइड सब्जेक्ट्स का अलग पेपर होगा. सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको क्वेश्चन ज्यादा मेडिसिन और अलाइड सब्जेक्ट से आएंगे. सर्जरी में सर्जरी के ही आएंगे, ऑब्स गायनी जैसे पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक्स के ही आएंगे, ऑफ्थाल में ऑफ्थाल के ही आएंगे. जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता था कि ऑफ्थेल से जैसे 9 क्वेश्चंस आएंगे, पीडियाट्रिक्स से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो +2 +3 होता, -3 होता था. बट नाउ यू हैव 60 डेडिकेटेड आइटम्स फॉर पीडियाट्रिक्स, 60 डेडिकेटेड क्वेश्चंस फॉर ऑफ्थेल्मोलॉजी. सो दिस इज व्हाई these क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. और हम अगर प्रपोज उसकी बात करें कि हाउ एग्जाम विल बी, सो देयर विल बी अराउंड 4.5 आवर्स ऑफ टोटल एग्जाम ईच डे, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मेडिसिन एंड राइट सब्जेक्ट. और आफ्टरनून में आपका पीडियाट्रिक्स का एग्जाम होगा, surgery and ENT, and obstetrics and ophthalmology. So there will be 2 papers each day with 1 day gap in between. And again, as they have said, this is just a indicative timetable, so we have to wait for the final. So I just want to summarize जो भी हमने बात की है about next exam and gazette. So earlier, if you have seen my previous videos, I divide subject into rank building, rank maintaining, and rank deciding subject. So इसके बाद I would like to redistribute this subject after this gazette. तो रैंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने, इनके बिना आपकी रैंक बिल्ड ही नहीं होगी. एंड इफ यू हैव
notice the tiebreaker criteria, और अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज कि कुछ सब्जेक्ट है जिनको हायर वेटेज दिया गया है, एंड आपको उसको सबसे पहले you have to make them strong. Followed by you have a rank maintaining subject. So the rank building subject here, they will make sure that you end up in the top 20, 30,000 in your competition. Rank maintaining subject will keep you in the competition. So once you finish this subject, you have to work on this subject like surgery, anatomy, obs, gynae, ortho, and anesthesia. तो ये सब्जेक्ट विल मेक श्योर दैट यू स्टे इन टॉप 20,000 रैंक. एंड लास्टली रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट. अब आप बोलोगे कि टॉप 20,000 में तो आप आ गए, बट वेर यू विल एंड अप इन द टॉप 5,000 और बिटवीन 5 to 20,000, that will be decided by the small subjects like derma, radio, FMT, and psychiatry. And I'll say plus minus ortho, anesthesia, and radio. I have forgotten. Okay, radio. So subject like anesthesia, ortho, also you can shift them from rank deciding to rank maintaining. But you have to keep in mind these questions of the subject of distribution. So whenever you start your preparation, start combining your rank building subject along with your rank deciding subject and followed by your rank maintaining subject. Now just I want to tell you few things, few words of wisdom. See, first of all, there is no reason to panic or overthink. Yeah, it's a different from what we are already doing. कि जो पहले एग्जाम होता था उससे थोड़ा सा अलग है. कोई अगर फिर से नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा लगेगा कि यार मैं ऑलरेडी मेरा ये सब हो चुका है, एमबीबीएस भी, I have already written my final exam. Now I have to again go through all the 6 papers. Yeah, you will feel like different, but the preparation will not change. It's just the number of questions that have increased. कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई अलग स्ट्रेटजी करने की. See, now the classes will drop, next classes, next specialty, next के लिए बनाए हुए कोई curated special classes. But trust me, you don't need anything else. You just need a smart work because there are lot more questions. So smarter work is required rather than the hard work. Again, as I have emphasized, simple questions will decide your rank. 60% the must know questions will decide your rank. That is why revisions will play important. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सिंपल, बहुत मैं सिंपल मिस्टेक्स करता हूँ, सिली मिस्टेक्स करता हूँ, how should I improve? See, there is no secret. Just revise more and more revisions. Your brain will be, full with that information and will make very less silly mistakes. Start early. Don't waste your time and be consistent with your preparation. Be honest with your preparation. Don't do a lot of things. Whatever source you are having, whatever path that you have chose, just because this new next exam came, you don't have to change it. You just have to follow the same things. Don't buy any fancy course, any different thing. Job पढ़ रहे हो आपको वही करना है. As I said, it's the same exam with the new fancy name. So this is just an introductory video. I will try to incorporate more mentors and more friends who have already cracked the NEET PG, that how they will like to share some strategies with. So let's begin this next journey. If you have any doubts and any confusion, let me know in the comment box. I wish you all the best and take care.